Saj and Qasim Vlogs। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो नाजरीन, आज हम लोग आपको सैर करवाएंगे थाउजेंड आइलैंड की। व्यूवर्स, आपने व्लॉग को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, इसमें एक सरप्राइज पार्टी भी है। Please do not remove any life jackets from their storage locations unless instructed to do so. Merci de votre attention. Welcome to Thousand Island. This vessel is one of 5 owned and operated by City Cruises and built right here in Gananoque. All of our boats are triple deckers and by far the largest fleet of aluminum tour vessels cruising the Thousand Islands. Gananoque. Tous nos bateaux ont 3 ponts et constituent de l'eau. This vessel measures more than 30 meters in length and nearly 9 meters in width, but draws only 2 meters of water, so we can take you through many of the narrow, shallow channels between the islands. Your safety and comfort is our first concern. Feel free to tour the vessel, but for everyone's safety and comfort, please walk and do not run on the boat. We also ask that you refrain from standing or sitting in stairways and passageways. Finally, please do not sit, stand, or place children on the outside railings. Again, an important safety measure. N'hésitez pas à visiter le navire, mais pour la sécurité et le confort de tous, veuillez marcher et ne pas courir sur le bateau. Nous vous demandons également de ne pas vous tenir debout ou de vous asseoir. Over the next hour, we'll sail through the heart of the Lake Fleet and Admiralty group of islands. Along the way, you'll have close-up views of islands big and small, some that are barely islands at all. Au cours de la prochaine heure, nous naviguerons au cœur des îles de la flotte du lac et du groupe d'îles de l'Amirauté. En chemin, vous aurez des vues rapprochées sur des îles grandes et petites, certaines qui ne sont à peine que des îles. You'll discover why people come to the islands from all over the world, not just in summertime, but also all year round. We invite you now to relax and enjoy yourselves while we share with you some of the culture and history that have added to the Thousand Islands' international reputation. Where meters of ground cover. La variété d'îles est remarquable. Certaines sont si grandes qu'elles sont cultivées, d'autres... That's McDonald Island, to our left. One of the more than 20 islands scattered up and down the St. Lawrence River that make up Canada's Thousand Islands National Park. Today, you will see 8 of the park islands. To the city of Kingston. To our right are 2 more park islands, Aubrey and Mermaid. Aubrey is known locally as Burnt Island,
But so are two other islands. Indeed, many islands have more than one name. We'll show you another one shortly. Mais deux autres îles portent également ce nom. En effet, de nombreuses îles ont plusieurs noms et nous vous en montrerons. North America, but also no place to be during a storm. Les célèbres 40 Acres, l'un des meilleurs endroits pour la pêche au masquinongé en Amérique du Nord. It averages 70 meters in depth and not a great deal more in width. Here, you'll be able to see several examples of Thousand Islands architecture up close. Today, its distinction is having the oldest summer, the white framed cottage on our right. La grande île sur notre droite est post-lac. À une certaine époque, elle était exploitée agricolement. Et aujourd'hui, sa particularité est d'avoir la plus ancienne maison de vacances des îles de l'Amirauté, Camp Iroquois. Vous pouvez la voir. C'est la maisonnette à cadre blanc sur notre droite. Many of these islands were purchased in the late 1800s. In fact, all of the Canadian islands were surrendered to the government by the Mississauga Band in 1856. It took almost 50 years for the government to sell off the islands, and in those days, there were deals to be had. Some islands sold for only $1 or $2. Its cottage was built in 1886, and it is still owned by descendants of the original.
is an unsummer cottage on a little island with a distinctive footbridge called La Vignette. It's become a tradition that started many years ago for family members to wave at us as our tour boat passes. À gauche, nous approchons d'un charmant chalet d'été situé sur une petite île avec un pont caractéristique appelé la Vignette. C'est une tradition qui a commencé il y a de nombreuses années pour des membres de la famille de nous saluer lorsque notre bateau touristique passe. Ahead to our left are Big and Little White Cap Islands. Beyond them is our home port of Gananoque. The name is First Nations in origin and seems to have a number of meanings. One of the most commonly accepted is door to the flint at the mountain. Forsyth Island lies on our right. Look closely, and you can see some granite rubble on the shoreline. That's left over from the days when this island and others were quarried. L'île Forsyth se trouve sur notre droite. Regardez attentivement et vous pourrez voir des débris de granit sur le propriétaire privé. One of the most unusual is the small brick and white cottage built in 1913. It's been dubbed Napoleon's hat because of its resemblance to the distinctive bicorn hat worn by Napoleon Bonaparte. L'un des plus inhabituels est le petit chalet en briques blanches construit en 1913. On l'appelle le chapeau de Napoléon en raison de sa ressemblance avec le chapeau bicorne distinctif porté par Napoléon Bonaparte. Is what the local residents call Leak Island.
navigational charts designate hospital and service number. The boundary agreement gave Canada 2/3 of the Thousand Islands in number, but the area or land mass of the Canadian and American islands is about equal. The Boundary Commission made certain that no island was split by the boundary. Freshwater fishing. Pike, largemouth and smallmouth bass, pickerel, and large channel perch can all be caught here. And the area quickly became a summer vacation playground for wealthy industrialists, politicians, and artists. Millionaires like William Waldorf Astor, George Pullman, and the Kellogg family built magnificent summer homes and luxury hotels here. Today, more than ever, people depend on the St. Lawrence for their lives and livelihoods. Those who live and work on the river take their roles as stewards of the environment seriously. For generations,
Ceux qui y vivent et y travaillent considèrent sérieusement leur rôle de gardien de l'environnement. Nous souhaitons tous veiller à ce que la splendeur impressionnante du fleuve et des îles que vous avez pu apprécier aujourd'hui reste inchangée pour que les générations futures puissent en profiter. तो व्यूअर्स, आज मेरे यान की 15th बर्थडे थी। उसकी बाजी ने उसके लिए सरप्राइज़ रखा। उन्होंने इसके लिए रिज़ॉर्ट बुक करवाया और ये बोट ट्रिप बुक करवाया, और उन्होंने सोचा था कि हम इसकी जो बर्थडे सरप्राइज़ करेंगे उधर शिप पे केक काटेंगे, लेकिन अफसोस उन्होंने इजाज़त नहीं दी फूड लेके जाने की। तो इसलिए फिर हमने जब वापस आए हैं तो फिर हमने उधर ही 1000 आइलैंड पे ही अजान की जो बर्थडे थी वो सेलिब्रेट की। तो आप भी देखें और एंजॉय करें, और मेरे बेटे के लिए लंबी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी दुआ करें, और अपनी हम सब को बल्कि अपनी दुआओं में याद रखें। Used for other things. Yeah, so Sina. No, they don't. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ayan. Happy birthday to you. Are you one? Are you two? Are you three? Are you four? Are you five? Are you six? Are you 7? Are you 8? Are you 9? Are you 10? Are you 11? Are you 12? Are you 13? Are you 14? Are you 15? Yay! Okay, take a picture. Feed your parents cake. पहले काटो तो सही ना, काटो ना, और राइट हैंड से काटो, राइट हैंड। खब्बू है ये ना, लेफ्टी है। इन्हों सूदर जड़ा ना फीड गिफ्ट करो इन्हों काके नु ना यार ये नवी पसुड़ी में नजर गया। मैं चला तो नहीं डरा रहा। पिक्चर इतना सा मामा फीड कुछ चम्मच बेबी ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗੀ। ओके अच्छा ए नु देओ ना अयान ना प्यार शेयर कौन देता, दैट्स इट। हां होले और जगार है ना गुगू काका, वो आपका अपना जाग गया है। तो व्यूअर, इसी खूबसूरत से व्यू के साथ आपको करते हैं अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूला करें। तो इसी के साथ खुदा हाफिज़, मिलेंगे फिर किसी नए व्यू के साथ इंशाअल्लाह।